Hello students, today's topic is bond prices and bond yields. Let's start. Suppose the bonds in our economy are 1 year bonds. That means bonds that promise a payment of a given number of dollars, say $100 a year from now. Let the price of bond today be $PB. If you buy the bond today and hold it for a year, the rate of return on holding the bond is, देखो rate of return कैसे निकलता है, formula final value minus initial value upon initial value ओके सो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो फाइनल वैल्यू क्या है कि अगर आप 1 ईयर तक बॉन्ड जो है वो अपने पास होल्ड करके रखते हो तो आपको कितना मिलेगा $100. दिस इज द फाइनल वैल्यू. सो $100. इनिशियली आज की डेट में उसका प्राइस कितना है, दिस वन, तो लिख दो $PB, राइट. अपॉन इनिशियल वैल्यू कितनी है, दिस वन, तो ये आपका हो गया एक तरीके से दिस इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन होल्डिंग द बॉन्ड फॉर अ ईयर. फाइन. Therefore, the interest rate on the bond is given by this one. यही वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू. इफ $PB इज $90, द इंटरेस्ट रेट इज, तो आप इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आया, 11.1% पर ईयर. जब आप इसे आप कैलकुलेट करोगे, बिकॉज इफ $PB इज, अगर हम इसे करें $100 माइनस $90 अपॉन $90, तो आपका कितना आ जाएगा $1 अपॉन $90. तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 0.0111. अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, राइट. तो फिर कितना आ जाएगा आंसर, ये 11.1%. ओके. इफ $PB इज $99, तो अब ये इंक्रीज हो गया. अगर हम जो आज का जो प्राइस है बॉन्ड का, जो टुडेज प्राइस है बॉन्ड का, अगर उसे हम इंक्रीज करते हैं, देन द इंटरेस्ट रेट विल बी, तो तब आप अगर आप इस प्राइस को इंक्रीज करोगे तब आपका इंटरेस्ट रेट कितना आ रहा है, 1.0% पर ईयर. रिजल्ट क्या रहा, दस हायर द प्राइस ऑफ बॉन्ड लोअर द इंटरेस्ट रेट. ओके, कि अगर जो बॉन्ड का प्राइस है और ये टुडेज प्राइस की बात हो रही है, राइट. मैं लिख देता हूं यहां पर, आज का जो प्राइस है बॉन्ड का अगर वो हायर हो जाए, देन द लोअर विल बी द इंटरेस्ट रेट, लोअर विल बी द रेट ऑफ रिटर्न. Reorganizing the formula above, the price today of a 1 year bond paying $100 a year from today is given by in this form. तो हम अगर यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन को अगर हम अरेंज करें, तो हम इसको इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, $PB इक्वल टू $100 माइनस $PB अपॉन ये जो I है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ओके. नेक्स्ट $PB, ये जो माइनस है ये वहां जाके हो जाएगा प्लस. ओके, जस्ट अ सेकेंड, नहीं यहाँ पर इंटरेस्ट रेट, this $PB we will multiply this with interest rate equal to $100 minus $PB. next step, ये जो माइनस है वहां जाके हो जाएगा प्लस, इसको हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो अंदर क्या रह जाएगा, I+1 इक्वल टू $100. नेक्स्ट स्टेप,
and this will become $100 upon this 1 plus I. This, okay. द हायर द इंटरेस्ट रेट द लोअर द प्राइस टुडे। तो इस इक्वेशन से हम ये देख सकते हैं कि अगर ये इंटरेस्ट रेट की वैल्यू जो है अगर ये इंक्रीज होगी देन दिस द टुडेज प्राइस ऑफ अ बॉन्ड विल डिक्रीज। ओके, यू मे रीड और हियर दैट बॉन्ड मार्केट्स वेंट अप टुडे। हम काफ़ी बार इस तरीके की स्टेटमेंट्स हम पढ़ते हैं दैट बॉन्ड मार्केट्स वेंट अप टुडे। तो उसका मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट द प्राइसेस ऑफ बॉन्ड्स वेंट अप एंड देयरफॉर दैट इंटरेस्ट रेट्स वेंट डाउन। ओके, तो इसका मतलब होता है दैट द प्राइसेस ऑफ बॉन्ड्स वेंट अप एंड बिकॉज अभी जस्ट हमने देखा दैट हायर द प्राइस ऑफ बॉन्ड्स एंड लोअर द इंटरेस्ट रेट्स, सो देयरफॉर द इंटरेस्ट रेट्स वेंट डाउन। We are now ready to return to the effects of open market operation. Consider first an expansionary open market operation. Expansionary open market operation का मतलब in which the central bank buys bonds in the bond market and pays for them by creating money. Right? Expansionary open market operation में हमने यही पढ़ा था कि central bank जो है वो bonds purchase करता है bond market में and then it pays for them by creating money and thereby this will lead to increase in money supply. As the central bank buys bonds, the demand for bonds goes up, increasing their price. भाई बात सही है। अगर कोई एक सिंगल इंडिविजुअल अगर बॉन्ड परचेज करेगा तो उससे ओवरऑल डिमांड पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक स्पेंड्स आई मीन सो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी on bonds. That is a reason it affects the overall demand for bonds. Okay, so when central bank buys bonds, the demand for bonds goes up. और हमें पता है जब किसी चीज की डिमांड जो है वो इंक्रीज होती है तो उसका जो नेक्स्ट इफेक्ट होता है वो क्या होता है? इंक्रीजिंग द प्राइस। राइट, अगर बॉन्ड्स की डिमांड इंक्रीज होगी देन द प्राइस ऑफ बॉन्ड्स विल बी इंक्रीज्ड। Conversely, the interest rate on bonds goes down because when there is an increase in price of bonds, then the interest rate on bonds will decrease. इसी का opposite case नहीं, note that by paying for the bonds with money, the central bank has increased the money supply. हाँ, ये बात सही है that when the central bank has purchased the bonds and paying the money, then definitely it will increase the money supply in an economy. Next, its opposite case that consider instead a contractionary open market operation in which the central bank decreases the money supply. It sells bonds in the bonds market and this leads to decrease in their price and an increase in the interest rate. तो यहाँ पे वो ये कह रहा है contractionary open market operation की अगर हम बात करें, contractionary open market operation में central bank क्या करता है? It sells bonds in the bond market which will lead to increase in the supply of bonds, increase in the supply of bonds in the bond market, right? And thereby because जब किसी चीज की सप्लाई जो है वो इंक्रीज होती है then it will lead to decrease in their price. अब प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है बॉन्ड्स का then there will be an increase in interest rate. Note that by selling the bonds in exchange for money previously held by households, the central bank has reduced the money supply. Summary: the interest rate is determined by the equality of supply of money and demand for money that we know. By changing the money supply, central bank can affect the interest rate. Central bank changes the money supply through open market operation, which are purchases or sales of bonds for money.
open market operation in which central bank increases the money supply by buying bonds leads to the increase in the price of bonds and decrease in the interest rate. तो ये अभी जस्ट हमने केस देखा था एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का, जहां पर ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेंट्रल बैंक जो है वो इंक्रीज करता है मनी सप्लाई, कैसे? बाय बाइंग बॉन्ड्स, एंड इट विल लीड टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ बॉन्ड्स एंड डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट. Because in this situation, when the central bank buys bonds, then the demand for bonds will be increased. Ultimately, there will be the increase in price of bonds and decrease in interest rate. And opposite case, the contractionary monetary policy in which central bank decreases the money supply by selling bonds. So when it is selling bonds in the bond market, then supply of bonds will be increased, ultimately leads to decrease in the price of bonds and increase in interest rate. So that's all from my side. Thank you.